Every 144 years, the banks of sacred rivers in India transform into a sea of faith, devotion, and humanity. This is the Maha Kumbh Mela, the world's largest spiritual gathering where millions of pilgrims, saints, and seekers come together in pursuit of spiritual awakening. The rarest and most grand celebration held only in Prayagraj. The origins of Kumbh Mela trace back to ancient Hindu mythology. The word Kumbh means pot, referring to the pot of nectar of immortality that emerged during the churning of the cosmic ocean. According to legend, drops of this nectar fell at 4 places: Prayagraj, Haridwar, Ujjain, and Nasik, making these sites sacred for the Kumbh Mela. The Maha Kumbh Mela is held every 144 years at Prayagraj, where the Ganga, Yamuna, and mythical Saraswati rivers converge. This confluence, known as the Trivenisangam, is believed to cleanse one of sins and grant liberation from the cycle of life and death. The Kumbh Mela is held every 4 years, alternately at Haridwar, Prayagraj, Nasik, and Ujjain. Kumbh Mela is held every 6 years, celebrated only at Haridwar and Prayagraj. The full-fledged Purna Kumbh Mela is held every 12 years at one of the 4 sacred sites, drawing massive crowds for holy river baths and rituals. For millions, the Kumbh Mela is a journey of the soul. It is a time to reconnect with faith, seek blessings from saints, and perform rituals for ancestors. The act of bathing in the holy water is believed to purify the soul and pave the way for enlightenment. Each moment here holds the promise of spiritual rebirth, where faith transcends all barriers of language, caste, and creed. One of the most fascinating aspects of the Maha Kumbh Mela is the presence of sadhus and ascetics. मैं कौशाम्बी जिला का हूँ, ललिता देवी मीरापुर प्रयागराज में रहता हूँ। तो में ऐसी मान्यता है कि आज का दिन अमृत ऊपर से वर्षा होती है, जिसको स्नान करके हम अपने किए हुए पापों जन्म के पाप को नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ श्रद्धालु सनातन धर्म की भीड़ इतनी हो रही है कि जिस कुल नंबर पे आप जाएंगे वही मनुष्य मानव ही पाएंगे। तो ये कहीं न कहीं सनातन धर्म को लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने सनातन धर्म को अग्रिम पीढ़ियों के लिए एक जो आचरण कर रहे हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी दे रहे हैं। ये देख करके बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। These holy men and women have renounced worldly possessions and dedicated their lives
to spiritual practice. आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आजमगढ़ से आए हैं। हाँ, आजमगढ़ से। आजा का सब पाप धो जाता है? हाँ, मन से राजा हो जाएगा। धो जाएगा। हाँ। अच्छा, और आज का जो दिन है वो विशेष क्यों है? आज विशेष का आज मान के रखा गया ना। हाँ, मौनी अमावस्या है। हाँ, मैंने उसमें कहा। अच्छा, ये क्या है? ये दिन क्या है? ये अमृत गिरा। कहाँ से आए हैं? जौनपुर कहीं मुसीबत हमको नहीं। रात में कहाँ रह रहे हैं आप? रात में कहाँ पर सो रहे हैं? हम सोचते हैं जमुना पार उस पार वो था। खुला आसमान के नीचे? हाँ, खुला आसमान के नीचे से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से इतना दूर आए हैं? आपका पहली बार आए या नहीं, पहले भी आए कुंभ में? पहले भी आए। अच्छा, कुंभ में आने से क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया, तीसरे साल फिर आए। अच्छा, 3 बार हो चुका हूँ। 3 बार हो चुका है। हाँ, यहाँ पर स्नान करने से बढ़िया, मुक्ति मिलता है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, आनंद मुक्ति मिलता है, इसलिए तो इतना दूर से दिगंबर आकाश। अच्छा, The Nagas, clad only in ash, are the warriors of spirituality, symbolizing detachment from materialism. Other groups, like Kalpvasis, live on the river banks for entire duration of the Kumbh, observing strict rituals and prayers. Organizing the Maha Kumbh Mela is a Herculean task. Temporary cities are built to accommodate millions of visitors, from sanitation and medical facilities to food distribution and security. Every detail is meticulously planned. बढ़िया लग रहा है। इतना भीड़ में बहुत सारे आवर्जन परिष्कार करना पड़ता है, तो अब तो दिन रात बहुत काम करते हैं। कुंभ मेला में ये काम करने का आपका अच्छा लग रहा है? এটা যেটুকু কন্ট্রিবিউশন আর কি হয়, ঠিক আছে। আমরা তো ঠান্ডা ঘরের মানুষ, এই মানুষগুলো যে মাঠে কাজ করছে এরা কি পরিশ্রম করে চিন্তার বাইরে, তো সেটা অভিজ্ঞতা করা উচিত। The Maha Kumbh is a logistical marvel. For weeks, the banks of the Trivenisangam transform into a massive temporary city, from housing millions of pilgrims to ensuring food, water, medical care. The scale of organization is staggering. Despite the sheer magnitude, there is a profound sense of order, harmony, and unity. Each corner of the city resonates with chants, prayers, and the hum of devotion. ये प्रयागराज से ही है। प्रयागराज से? आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी सर, कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से 1 हफ्ते से है। 1 हफ्ते से है। 24 तारीख से। अच्छा, तो बहुत सर्विस देना पड़ रहा है यहाँ? हाँ। अच्छा, अच्छा। और आप यहीं पर खा लेते हैं? हाँ, यहीं पर फ्री में खाना मिलता है? हाँ, फ्री में खाना मिलता है, हमारे कैंप में भी मिलता है। कैंप में हम लोग को वहाँ पे कैंप में हर एक व्यवस्था है हमारे। यहाँ पर काम करने के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। This is the Netra Kumbh. हो रहा है निःशुल्क चश्मे बन रहे हैं, जांच हो रही है बिल्कुल निःशुल्क सभी को। बिल्कुल फ्री है? हाँ, जो कोई भी आकर दिखा सकता है यहाँ? कोई भी बहुत अच्छा सुविधा है। अच्छा, बैठने का एक अच्छा, इनके माध्यम से सब हो रहा, ये करवा रहे हैं, इनकी संस्था करवा रही है। ठीक। The Kumbh Mela is not just a spiritual gathering, it is a celebration of India's rich cultural heritage. From folk music
to ancient Vedic chants, the Mela vibrates with energy and diversity. Every individual at the Kumbh has a story. Stories of hope, faith, and transformation. For some, it is a once in a lifetime journey. For others, it is a yearly tradition. Some have walked for days to reach this sacred confluence. Others have waited a lifetime. The Maha Kumbh is not just an event, it is an emotional tapestry woven with the hopes, dreams, and prayers of millions. Amidst the grandeur and devotion of the Maha Kumbh Mela, there exists another world, one of survival, struggle, and resilience. The small shopkeepers and beggars who line this sacred street fight daily battles to make ends meet. For many, the Kumbh Mela is not just a spiritual journey, but a rare opportunity to earn a livelihood. Small vendors travel from across India, setting up makeshift stalls, selling everything from prayer beads to warm meals. Yet, behind every sale is a struggle, the uncertainty of income, rising cost, and the challenge of competing in a sea of sellers. हमारा घर साहब गोंडा जिला है, वजीरगंज थाना। अच्छा, गांव का नाम है राजा सगरा। आप क्या बेच रहे हैं? हींग है, रंग है, सेनूर है। आप क्या ये बेचने ही आए हैं? हाँ सर। स्नान भी किए हैं? नहीं, हम डेली स्नान करेंगे, डेली बेचेंगे। या स्नान करने से पुण्य होता क्या? अरे लो साहब, यहाँ लाखों करोड़ों आदमी है, पुण्य नहीं है। अच्छा चीज है। महाकुंभ की जय भाई। इन्हीं के वजह से ये कुंभ चल रहा है। और पिछले उज्जैन, हरिद्वार, नासिक सब दूर हर पार लगाते हैं और इसी स्टाइल में लगाते हैं। अच्छा, मिठाई थोड़ी होता है। उज्जैन महाकाल और उसके आसपास के गांवों का मंडल है। अच्छा, और इसी ये रामायण भी कराते हैं, अखंड रामायण, जो 108 रामायण एक साथ होती है। हमने रामेश्वर, जनकपुर, अयोध्या में की है। और हर कुंभ सिंहस्थ में आपका भंडारा चलता है और पूरी पब्लिक साधारण आम जनता भोजन करती है। कितने सालों से आपका भंडारा चल रहा है? 92 से। अच्छा, हर कुंभ में पन्ना लाल जी शर्मा। नमस्कार पन्ना लाल जी। महाराज की जय। नेपाल से किससे आए? पैदल चलकर या पैदल चल के आए हैं। 9 दिन पैदल। अच्छा, 3 दिन गाड़ी से। किसके लिए? भोलेनाथ के लिए। हाँ, भैरव बाबा के लिए। अच्छा अच्छा, ये एक परंपरा है। हाँ, ये परम 4 है। अच्छा परम। अच्छा, ठीक है। स्नान किया है आप? हाँ। अच्छा, स्नान करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। जय भगवान श्री रामकृष्ण। मैं प्रयागराज का तीर्थ पुरोहित पंडा आशीष महाराज, रामकृष्ण मिशन से। तो हमारे यहाँ यात्रियों को रहने की सुविधा दी जाती है। करीब 100 लोगों की व्यवस्था में कर सकता हूँ।
जो भी लोग कुंभ मेला में आना चाहें उनका स्वागत है। The Kumbh Mela is not just an Indian festival, it has gained global recognition for its sheer scale, spiritual depth, and cultural vibrancy. Pilgrims, photographers, researchers, and spiritual seekers from around the world travel to witness this unparalleled gathering of faith. The festival offers a unique insight into Hindu traditions, rituals, and philosophies, making it a subject of interest for scholars and documentary filmmakers worldwide. UNESCO has recognized it as an intangible cultural heritage of humanity. Where are you from? From Germany. Where from? We are from Germany. Your name? My name is Stefan. My name is Sophia. Why you come here? We are traveling in India, and so we want visiting also the very special Kumbh Mela. Thank you. Ich komme aus Deutschland. Ich auch. Ich lebe in Aachen. In Aachen? Okay. From Peru and Estonia. Huh? From Peru and Estonia. Why are you coming here? Okay. Thank you. As the Maha Kumbh Mela slowly comes to an end, the echoes of chants, the scents of incense, and the ripples in the sacred water linger in the air. For weeks, this land has been transformed into a living testament of faith, a place where time seems to pause and millions unite in their spiritual journey. But the Kumbh Mela is more than a festival. It is a cycle of devotion that transcends generations. The lessons learned, the blessings received, and the moments of self-discovery travel back with every pilgrim, touching lives far beyond this sacred source. Though the tents will be dismantled, the river banks emptied, and the chants will fade, the spirit of the Kumbh lives on. It is a reminder that faith is not confined to a place or time. It flows eternally, like the sacred rivers, through the hearts of those who seek it. And as this chapter of the Maha Kumbh Mela closes, another awaits years from now at this very water where millions will once again gather, drawn by the eternal call of the divine. Thank you for joining us on this journey through the Maha Kumbh Mela. Subscribe to AB Documentary for more stories from around the world.